Hello students, welcome to e-learning. We are continuing with the same chapter, chapter 5, that is cost of production and concept of revenue. This is the sixth lecture. We have already completed various concepts of cost and we have started with short term and long term periods in economics, or short term and long run, we can say long run periods in economics. Now here we have completed the in short run first one, that is the fixed cost. Today we are going to learn about the variable cost under our sixth lecture. So same way with the fixed cost, how it was a constant, no matter how much change in production will be there is an increase, decrease, or zero production, the fixed cost remains the same, as we know the definition. So that was the fixed cost, and it includes the different factors, or sorry, different costs, like we can say license, tax, fixed income tax, we can say fixed sales tax, all this particular insurance premium was been the expenditure which was been there. Now here we are going to learn about the variable cost. Now the word variable means changing. So what does the variable cost say? So when the cost incurred on variable factors. Now what are the variable factors? So variable factors by producer is called variable cost. मतलब यहाँ पे हमको समझना है कि variable factors क्या है. भाई बिजनेस के अंदर प्रोड्यूसर्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर वेरिएबल फैक्टर्स कौन से रहते हैं? व्हाट आर द थिंग्स इन विच आर देयर इन हिज हैंड विच ही कैन चेंज इन अ शॉर्ट रन. मतलब छोटे टाइम पीरियड में 2 3 5 एक साल के अंदर 2 3 4 5 महीने नहीं तो एक साल के अंदर वो क्या क्या चीज़ चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ द फर्म. ओके, सो because that is the main thing here in the short run. So you find that some of the variable cost factors are there which he can change, that is raw materials. So here again to elaborate more definition, you find that with the change in quantity of production, मतलब हम अगर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर देते हैं इट ऑल्सो चेंजेस. यस, नाउ अगेन विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज. अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा. इफ़ यू reduce or if we decrease the production, you find that the cost also decreases, and if the production is zero then the cost is also zero. So it is known as variable cost. Yes, सिंपल चीज़ है. अगर आप खाना बनाओ तो खाओगे, खाना नहीं ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा खाओगे, कम बनाओ तो कम खाओगे, नहीं बनाओगे तो नहीं खाओगे. Yes, so if you are living at home and you are living from at a home food only, then so ultimately अगर कोई बंदा प्रोडक्शन करेगा, मीन्स ही इज हैविंग द प्रोडक्शन हाउस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. सो इफ़ ही प्रोड्यूस मोर ही कैन सेल मोर, इफ़ ही प्रोड्यूस लेस ही कैन सेल लेस. सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग अप, ही इज चेंजिंग द क्वांटिटी. नो मैटर उसके ऊपर क्या डिमांड सप्लाई ये सब नहीं लगेगा यहाँ पे. वी आर थिंकिंग अबाउट जस्ट वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट आर द थिंग्स, अगर प्रोडक्शन चेंज करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या लगेगा? एक्स्ट्रा लेबर्स लगेंगे, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स लगेगा, एक्स्ट्रा काम टाइम एफर्ट्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाएगा. वी हैव टू गो विथ मोर वी कैन से मशीन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाएगा, फ्यूल ज़्यादा जाएगा. सो अल्टीमेटली व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन you require raw material to increase, you find that labors to get increase, you require different same machines for more production, you require electricity consumption more. So ultimately you can increase the production. same way अगर decrease करना है तो यही चीज़ जो increase कर रहे हो उसको decrease कर दो, means you require less raw material, less labor, less machine and less electric consumption. So all that particular which I told you, that is this particular thing comes under योर वेरिएबल फैक्टर्स. क्लियर, जो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन. फिक्स कॉस्ट को कुछ लेना देना नहीं है प्रोडक्शन, बिकॉज लाइसेंस एक बार ले लिया, आप बिजनेस करो ना करो, इट इज़ अप टू यू. then after same way you have taken insurance, you are producing goods, sending or not, you it is upon you. Same way your tax, house tax, you find that your sales tax, everything is fixed. Suppose it has been it not up every year this much turnover is there, this much प्रोडक्शन इज़ देयर, टर्नओवर इज़ देयर, सो इतना सेल्स टैक्स होगा. सो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें फिक्स रहती है, उसके अंदर प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता. बट हियर व्हेन इट कम्स टू द वेरिएबल फैक्टर, वी फाइंड दैट हियर वेरिएबल इंक्लूड्स द लेबर, द रॉ मटेरियल्स, द मशीनरीज, एवरीथिंग which helps in the production process and which we can change, either increase, decrease, or we can be made it zero. So production can be increased, production can be decreased and production can be zero. So ultimately उसके ऊपर ही डायरेक्ट कॉस्ट डिपेंडेंट है, तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, कम होगा और ज़ीरो हो जाएगा. So that is all is about variable cost. So here we can say variable cost is known as unstable, डायरेक्ट और मेन कॉस्ट. इसका तीन नाम है.
अनस्टेबल कॉस्ट बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, नहीं तो मेन कॉस्ट भी बोल सकते। वाई मेन कॉस्ट? बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग फॉर द प्रोडक्शन के लिए ये मेन नेसेसरी थिंग्स है। यही जो लैंड लेबर कैपिटल मिक्स होके ये प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको वेरिएबल कॉस्ट मिले बोलेंगे। सो हियर अल्टीमेटली द कॉस्ट हैज़ अ डायरेक्ट और वी कैन से पॉजिटिव रिलेशन विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ इसका पूरा डायरेक्ट रिलेशन है कॉस्ट का। सो कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन विच इज़ बीन प्रोड्यूस। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी माइट सम केसेस ज़्यादा होगा, नहीं तो ज़्यादा प्रोडक्शन, बल्क प्रोडक्शन ज़्यादातर कम पैसे में बनता है। सेम वे यू फाइंड दैट इफ द प्रोडक्शन इज लेस द कॉस्ट विल इंकर। सो इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्टिकुलर कॉस्ट। डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, सॉरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन, कॉस्ट इज बीन अप्लाइड। सेम वे अगर डिटेल में जाए, so your variable cost are different variable cost are there which includes here first is price of raw material. yes, again price raw material भी important है, उसका price भी important, because price की वजह से raw material के price की वजह से there is a change in production. कोई बार क्या होता है कि if the price of that particular raw material increases, what happen, you will produce less because it is costing you more than the previous raw material. Then you find that energy consumption, यू रिक्वायर मोर एंड मोर लेबर्स, एनर्जीज कंजप्शन। नहीं तो यहाँ पे एनर्जी की बात करते इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस की आ सकते हैं। देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, यस, व्हेन यू प्रोड्यूस मोर यू नीड टू एक्सपोर्ट, यू नीड टू ट्रांसपोर्ट मोर टू डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा आ जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। लेबर वेजेस, यस, लेबर इफ दे आर वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वी रिक्वायर मोर लेबर। when you are giving more labor you have to pay more wages to the labor. अगर ओवर टाइम कराओ, एक्स्ट्रा टाइम कराओ तो और पैसे देना पड़ेगा। then after tax on product, yes, whatever amount of product or how much unit of production is been done, on every unit of production there is a tax which has been applied. so tax is to be paid which has been there, so it is directly connected with the production. so tax बढ़ेगा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। सेल्स टैक्स, yes, the more number of units you produce and sell in the market, the more number of sale is been done. so when more number of sale is been there, sales tax, that is sales income tax, you have to pay to the, we can say, government. so all these are comes under the variable tax. as well as you find that as the production increase, this particular cost also increases. अगर ज़्यादा प्रोडक्शन बनाओगे तो रॉ मटेरियल के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, लेबर के वेजेस बढ़ जाएंगे, टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स विच आर बीन प्रोड्यूस बढ़ जाएगा, टैक्स ऑन द प्रोडक्ट विच आर सोल्ड वो भी बढ़ जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस ऑल आर द वेरिएबल फैक्टर्स एंड ऑल दिस आर द वेरिएबल एक्सपेंडिचर विच इज बीन डन बाय अ प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर product which is been. so therefore this all particular things are included under variable cost. इसको सबको variable cost बोलेंगे। okay, clear cut, you have to have a clear cut idea about what are fixed costs and what are, we can say, variables. it is very simple. fixed is relating, not relating with the production, उसके ऊपर जैसे लाइसेंस है, लाइसेंस फीस, they are not relating with any kind of production, but यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पे डील करता है। फिक्स कॉस्ट इन अ शॉर्ट रन, वो उसका साइज चेंज, शॉर्ट टर्म में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उस हिसाब से आपको मशीनरी कोई चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज द मटेरियल, वी कैन चेंज द, वी कैन से, वी कैन इनपुट more laborers, we can input more raw materials so that we can produce more. Same way opposite vice versa we can also do. so this is all about variable cost. Now to understand more clearly, we have the schedule of variable cost. so here is a schedule with a two columns. first outputs, or we can say outputs which are been there, and second you find that variable cost. so when production is 0 you find that here again variable cost is 0. when production increase to 10, मतलब हमने 0 से 10 units बना दिए, so when 10 units are made, the production cost is of 10 unit is nothing but we can say 80. so हमारा 10 प्रोडक्शन करने के लिए 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इट कॉस्ट इज अस 80 रुपीज़. when again from 10 to 20 again 2 and more is been increased, it become what 80 plus 80 होना चाहिए, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 150 हो रहा है. सो डिफरेंस इज व्हाट 70. मीन्स व्हेन यू प्रोड्यूस मोर 10 एक्स्ट्रा यूनिट यू फाइंड दैट आवर कॉस्ट हैज रिड्यूस्ड with means cost is also increasing but a decreasing rate. ये decreasing rate पे increase हो रहा है, मतलब 80 plus 80 160 होना चाहिए, यहाँ पे 10 plus 10 20 हो गया, तो यहाँ पे 80 plus 80 160 होना चाहिए, लेकिन वो cost कम हो गया because you have produced more, it has become 150. same way अगर
और 10 ऐड कर दिया तो 20 प्लस 10 30। सो हियर क्या हो गया, 150 प्लस 80 होना चाहिए। यस 20 पे 150 है, 10 पे ये है, तो लेकिन कितना हो गया 210। इट इज़ नॉट 230, इट इज़ 210। अगर 80 के हिसाब से 83 सा 240 होना चाहिए, लेकिन 210। सो अल्टीमेटली यू फाइंड दैट द कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हेन यू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ, वी कैन से, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। मोर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट कम होता जाएगा एट सर्टन पॉइंट। ओके रिमेंबर एट सर्टन पॉइंट। अगेन 30 से 40 चला गया, मीन्स 30 plus 10 40, the units are 40 now the cost should be how much, it is 210, लेकिन 210 प्लस कितना होना चाहिए 80 तो 290। यस सेम हो गया। देन आफ्टर यू फाइंड दैट 40 से 50 गया तो 210 90 प्लस कितना होगा तो 390 100। सो हियर द कॉस्ट हैज इंक्रीज। सो अल्टीमेटली you find that when the costs are increasing, sorry, when the production is increasing the cost is also increase। when production कम हो जाता है तो we can say cost is also becoming less। now to understand very clearly we have to plot on a diagram way। so you have a plotting diagram, you find it here, where you have taken up here on the x-axis the output, on the y-axis the variable cost। now the scale is 2 centimeter 10 units here on the x-axis, and here 1 centimeter with the 50 rupees cost। so this is what the scale is। so you have to mention, we have not mentioned the scale here, but in examination, in the graph paper and in your drawing diagram, you have to measure you have to write down the scale, that on x-axis and on y-axis how much centimeter equals to how much unit or rupees this is being measured। now we are seeing this particular line already which has been drawn, but we will plot it here again। so यहाँ पे 0 पे 0, so it is here 10 rupees पे 80। so here rupees, sorry, 10 units of production, तो यहाँ पे 10 unit production and it is between 100 and 50। now when your production increase to 20, मतलब यहाँ से ये 10 से 20 increase हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया 150। same way here when again production increase to 30, your it become 210, so it is about 200। again it increased 10 more, so it is 290। now it is here less below 300। and here again when it increased by more 10 units, you find at 50 units it is less below 400। so this curve which has been, when you joined all this combination of points, you find that you have observed that there is a curve which has been brought up here। yes now again this is called total variable cost, this is called what, total variable cost। now one more main point which I told you, like इसका cost जैसे production increase हो रहा है यहाँ पे 10 से 20, तो 80 plus 80 160 होना चाहिए, नहीं हुआ, उससे कम हुआ। so that particular point I am going to explain here। when production is zero, variable cost is zero, but when production increases the variable cost also increases। ये point clear हुआ कि variable definition meaning के हिसाब से कि भाई production zero है तो cost zero है, production जैसे चालू किया तो हमारा cost incur होना चालू हो गया। but from the table we can see till 30 units variable cost is increasing at a diminishing rate। yes यहाँ पे देखो 10 20 30, यहाँ पे 80 80 160 होना चाहिए, 160 प्लस 80 240 होना चाहिए, तो ये उस हिसाब से प्लस नहीं हुआ। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते गए इसका ये कॉस्ट तो इंकर कर रहा है लेकिन उससे कम में, मतलब और पैसे बचा रहा है। सो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, your we can say cost is becoming reducing rate, it is increasing but it is increasing at a diminishing rate। diminishing मतलब कम रेट पे कम पैसे पे ये increase हो रहा है। that's why you find that your curve is being going little, it is not straight line directly but it's going like this, clear, थोड़ा curve आ रहा है। so till 30 you find that the cost is has been, we can say it is decreasing। अगर यहाँ पे डिफरेंस देखे तो 20 and 30 के बीच में, तो 210 माइनस 150 it is 60, मतलब 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए तो कितने रुपए लगे 60, लेकिन अगेन 30 के बाद 40, मतलब 10 यूनिट्स 30 के बाद ऐड किया तो यहाँ पे कॉस्ट कितना हो गया 80 रुपीज़। सो 60 से 80 हो गया। सो द कॉस्ट हैज़ इंकर्ड आफ्टर सर्वल पॉइंट, मतलब यहाँ पॉइंट सी के बाद ये कर्व ऊपर जा रहा है, पहले ऐसे नीचे जा रहा था, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। So ultimately we find that at point 30, at certain point the cost becomes minimum, it increases as a diminishing rate, मतलब कम रेट पे इंक्रीज होगा। but after some time
After 30 units, the decreasing return to scale is applicable due to variable cost is increasing at increasing rate. मतलब 30 तक डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट पे था, मतलब कम पैसे पे वो कॉस्ट हो रहा था. बट when the cost has increased, sorry, when the production has increased from 30 to 40, means 10 more extra unit, it cost 80 more. मतलब पहले 60 लगा था, जैसे यहाँ पे डिफरेंस मैंने लिया 210 माइनस 150, इट इज 60. बट यहाँ पे देखो तो 290 माइनस 210, तो 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुआ. सो पहले 60 था, अभी 80. तो योर नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. सेम वे 40 में अगर 10 मोर यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे यू फाइंड द डिफरेंसेज ऑफ 100. दैट इज 390 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्रीवियस कॉस्ट इज 290. सो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना है 100. पहले कितना था उससे पहले 80. सो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज है. सो एट सम पॉइंट इट इज गोइंग विथ, it is increasing with the diminishing rate, and after that it is increasing with the increasing rate. So this particular is a main point in under variable cost when you explain this particular diagram and table. Clear? So ये याद रखना कि variable cost पहले ज़ीरो था तो कॉस्ट ज़ीरो रहेगा, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. लेकिन एट सर्वल पॉइंट द प्रोडक्शन increase, as the production increase, the cost is increasing with diminishing rate, the second point. And then comes the third point, that is after that minimum, that is यहाँ पे 30 इस वजह से 30 लिखा है. after minimum point you find that this decreasing return to the scale is applicable. and उसके बाद variable cost कैसे increase हो, it is increasing at increasing rate. So this is what all about your variable cost. Now going with the analysis, you find that here in diagram x, we can say on the x-axis you have taken we have taken up outputs, that is in units, and on the y-axis we have taken total variable which has been measured in rupees. Now then after, as production increased from 10 20 30, the variable cost will increase from 80 150 and 210. yes, यहाँ पे देखा 10 पे 80, 20 पे 150, 30 पे 210, that is the variable cost. So we find that till 30 there is a positive slope from the initial point of as it was increasing. yes, as it was increasing, हमने जैसे देखा भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इंक्रीज हो रहा है. इट इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट. डिक्रीजिंग रेट क्यों, 80 80 160 हो जाए, 83 से 240, लेकिन उससे कम रेट है यहाँ पे. लेटर ऑन इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, जैसे it goes 40 50 पे 290 and 390 it was the cost. So 80 and 100 was the difference which was been there. So in short term fixed costs are fixed but variable cost keeps on changing. हमको ये याद रखना है कि शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स तो रहेगा सेम, उसके अंदर कोई चेंज. इफ 100 इज द कॉस्ट इट विल बी रिमेइंग 100, बट वेरिएबल विल चेंज. Why? Because it keeps on changing with the production. It is directly related with the production. Now the cost is directly related with the production. That is why Professor Marshall has said variable cost is a main cost, because हमारा main cost क्या है, that is our variable cost, जिससे production हो रहा है, जिसका अंदर main concept है production के लिए. because license fee include नहीं करेंगे भी इसके अंदर, ज़्यादातर we can say tax will be there, or we can say fixed sales tax or fixed tax on product will be taken up. but यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें फिक्स कॉस्ट कम लेंगे. तो वेरिएबल कॉस्ट इज अ मेन कॉस्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ बीन टोल्ड बाय प्रोफेसर मार्शल. आई होप यू आर बीइंग क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस with the increase in production, decreases with the decrease in production. At certain point in the initial state it increases with the diminishing scale or diminishing return, but after that at the same minimum point, after reaching to the minimum point, you find it increases with the increasing rate. So this is what you find in under variable cost. Next class we are going to learn about the total cost, and then after followed by different long run cost, or we can say average cost we are going to learn. I hope you are being clear. If you find any doubt you can just call, message me. You need to write down the notes in the notebook. I will be sending the pictures, as well as you have to draw, because every diagram which you draw in your notebook will help you to understand more clearly. So you need to, though it is there in the textbook, you need to draw again in your notebook, which will help you to remember during the examination time. You won't get confused. I hope it has been clear to you. Thank you. Bye.